So we are going to see how we can represent. So we'll not we say Hilbert space and coordinate representation. तो अगर आप ये हिल्बर्ट स्पेस थोड़ा ये हैवी टर्म हो जाता है आपकी इस स्टेज पे, सो यू कैन से हिल्बर्ट स्पेस आप कहेंगे कि इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस है इन द सेंस वेयर जो आपकी जो स्टेट्स साई फंक्शन है ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज इट इज गोइंग टू एंड ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ वेव फंक्शन साई, ठीक है, ऑन आइगन स्टेट साई एंड इट विल गिव इट सर्टेन आइगन वैल्यू है ना, एंड दैट शुड बी रियल. अब वो आइगन वैल्यू कहां पर लाई करेगा, ठीक है, उसका वैल्यू कंटिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है. सो वी नॉर्मली अज्यूम दैट इट्स ऑन अ सॉर्ट ऑफ रियल लाइन जिस तरह की है ना. सो वी कैन जो उसका देयर विल बी स्पेक्ट्रम ऑफ दोज वैल्यूज आइगन वैल्यूज है ना, एंड दे वी कैन अज्यूम देम. They can be finite, they can be infinite, they can be continuous, they can be discrete. ठीक है. So to each eigenstate there is a eigen value which is associated, and eigenstate पे which is being operated upon by some operator है ना in quantum mechanics. So this is the way we energy eigenstate है, पोजिशन ये each eigenstate का अपना एक ऑपरेटर होता है, ठीक है. अब मसला ये हमारे पास है, फॉर एग्जांपल so you might have you heard something called denumerable है ना. एक हो गया denumerable means finitely, एक हो गया finitely uncountable, so कहते हैं denumerable. finitely uncountable, एक हो गया countable means denumerable, and if it's indenumerable then it's. So अब ये है डिफरेंट आइगन स्टेट. जिस तरह हमारे पास रियल लाइन में बिटवीन टू नंबर्स देयर कैन बी इनफिनिट नंबर्स है ना. सो दोस काउंटेबल observables which we associate with these eigenstates, which will give those eigenvalues which are supposed to lie on that space which we call Hilbert space, which is an infinite dimensional space, ठीक है. दे अब वो हमारे पास काउंटेबल स्टेट्स हैं कि अनकाउंटेबल स्टेट्स हैं, दे आर डिस्क्रीट स्टेट्स और दे आर कंटिन्यूअस स्टेट्स. तो दिस इज द थिंग. अब हमारा ये काम है, एटलीस्ट वी शुड मैथमेटिकली हैव ए फॉर्मुलिज्म वेयर वी कैन रिकॉग्नाइज देम, वेयर वी कैन, और रादर वी कैन समहाउ उसको हम कैसे सिंबॉलिकली राइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ some formalism, ठीक है. Because later we can enumerate those states. पहली स्टेज को एटलीस्ट यू हैव टू फॉर्मलाइज देम, कैसे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोज स्टेट्स. अब हमारे पास मसला आ रहा है कि जो हमारी स्टेट्स हैं मैथमेटिकली, हमारे जो स्टेट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स, दे मे बी ऑर्थोगोनल और दे मे बी ऑर्थोनॉर्मल. ये हम करते आए हैं, और ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स एंड so orthogonal and orthonormal states are there. So if they are orthogonal states and orthonormal states, तो हमारे पास we can have continuous spectrum of कॉमन प्लेस जो ऑब्जर्वेबल्स हमारे पास हैं. कौन से वाले? पोजीशन ऑब्जर्वेबल हो सकता है, मोमेंटम ऑब्जर्वेबल हो सकता है ना. तो ईच पोजीशन देयर कैन बी आइगन स्टेट होगा, उस पर ऑपरेटर एक्ट करेगा, उसका एक आइगन मोमेंटम का होगा, एनर्जी का होगा, व्हाटएवर. जरा क्लासिकल मैकेनिक्स में है ना, मतलब बट इट विल हैव कंटिन्यूअस वैल्यू. तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेरिएबल्स हैं तो उनका एक ऑपरेटर के हिसाब से हम उसको निकालते हैं वैल्यू, ठीक है. बिकॉज जो साई है, स्टेट साई, हम बेसिकली साई का एवोल्यूशन देखते हैं स्पेस टाइम में. वही तो है ना श्रोडिंगर इक्वेशन. अब जो साई है, साई इज कॉम्प्लिकेटेड. इसमें वेव एस्पेक्ट भी है
पार्टिकल एस्पेक्ट भी है एम्बेडेड, ठीक है। सो उसका देख रहे हैं हम इन दैट सेंस। सो इट बिकम्स बिट डिफरेंट। क्लासिकली आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मूव किए, है ना, तो यहाँ पहुंचा पार्टिकल आफ्टर फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, इट विल रीच दिस पॉइंट। हियर इट्स नॉट फोर्स, इट्स नॉट अ पार्टिकल, इट्स स्टेट साइन, इसका एवोल्यूशन हम देख रहे हैं। अब उस एवोल्यूशन को हम एट पॉइंट टू पॉइंट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ आइगन स्टेट्स, आइगन वेक्टर्स, है ना, इन दीज कंटिन्यूम और डिस्क्रीट जो भी इसका पैरामीटराइजेशन होगा। हाँ, दैट्स इट। अब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम कहते हैं जो आइगन स्टेट्स है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑपरेटर एक्टिंग ऑन ऑब्जर्वेबल दिस शुड बी इक्वल टू, सो हम कहते हैं कि जो आइगन स्टेट है इट शुड ऑलवेज बी, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, जो ऑब्जर्वेबल एट द एंड, इट शुड कम आउट टू बी रियल। तो इससे हमको एक चीज पता, व्हाट वी कैन, एक तो आप पढ़ रहे हैं कि एक तो डिराक डेल्टा फंक्शन है, सुना है, एक है क्रोनिकल डेल्टा। तो डिराक डेल्टा में क्या होता है, द डेल्टा फंक्शन बिकम्स मैक्सिमम एट द ओरिजिन एंड जीरो। हाँ, तो क्रोनिकल डेल्टा में क्या है, इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 0। अब ये है कि जो हमारे पास ये है, ये आइगन वेक्टर्स, व्हाट वी आर सेइंग इज दैट आइगन वेक्टर्स which are admissible and for which eigenvalue k prime is real and which can be normalized in terms of Dirac delta function, in terms of and normalized in terms of delta functions rather than क्रोनिकल डेल्टास। तो अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज होगा, इसका एक ही वैल्यू होगा एट ए गिवन पॉइंट, सो इट्स बेटर दैट वी रिप्रेजेंटेड बाय डिराक डेल्टा फंक्शन रादर देन, सो इफ इट्स नॉर्मलाइज्ड मींस उसका प्रेजेंस है कहीं पर, ठीक है, एट द एंड जो नॉर्मलाइज स्टेट होगी साई स्टार साई इज इक्वल टू 1। सो इन द सेंस दैट इफ इट्स आइगन वैल्यू हम रियल है और नॉर्मलाइज्ड है, इट्स represented by delta function rather than this thing. So in terms of rather than rather than chronicle delta function, तो इसका ऐसे हम represent करेंगे k state, bra state, if you don't have not कल आए थे, ये हो गई जितना हम इनर प्रोडक्ट करते हैं ना ऐसे, साई स्क्वायर इज साई स्टार साई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई है साई स्टार, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं साई इन ब्रैकेट नोटेशन, इट्स इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्टेट्स, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इफ यू फाइंड इट एट सम पॉइंट, इट्स एट k minus k delta dash, so is that if k prime is equal to k delta dash, it's maximum, it's, and otherwise it's not. So the presence of the particle at a given point can be seen as represented like this. अब हमारे पास मसला ये है कि जो हमारी स्टेट्स हैं इसमें दोनों स्टेट्स आ सकती हैं। नॉर्मली हम कहते हैं जैसे क्वांटम में टेक डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, एनर्जी स्पेक्ट्रम में है ना, अब इसमें कंटिन्यूअस वैल्यूज भी आ सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज भी आ सकते हैं। सो इन प्रिंसिपल वो शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट जो हमारी जो आइगन स्टेट्स, आइगन कैट्स या उनका आइगन वेक्टर्स का वैल्यू जो आएगा, वो शुड बी एटलीस्ट एबल टू एन्यूमरेट ऑल द डिस्क्रीट स्टेट्स एज वेल एज कंटिन्यूअस स्टेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इफ द स्टेट इज साई, इफ द स्टेट इज साई, and the state is psi,
psi, तो this is k, this is ki psi, so ये होगी एक डिस्क्रीट स्टेट एंड दिस इज आई जस्ट रीड डी के डायट कि पहले ये देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस वन इज डिस्क्रीट स्टेट, दिस इज, क्योंकि यहाँ इंटेग्रल है ना, डिफिनिट लिमिट्स. अब ये क्या है, ये जो आपने डबल सॉर्ट ऑफ, दीज आर टू स्टेट्स. जिस तरह साइन साइंस का है ना, और इस तरह के अगर ऐसे आएगा ये भी वन है, के ऐसे हमने लिखा है, डू नॉट कम इन द लास्ट क्लास, तो के ऐसे आएगा. सो this is sine. You can normalize it, it's equal to 1. So it's equal to 1. So you can write it. अब ये U ऐसे हमने लिखा. अब इसमें it's a for a particular eigenstate, it may belong to some discrete value or it may belong to some continuum spectrum of values. So it depends. For example, so if you go to the book, he has said कि आप atomic physics में section 19.7. So आप देखो उसमें क्या है limit. So अब ये है कि इसका expansion हमारे पास जो है, it can come out to be k जो हमारे पास है, k जो हम यहाँ पर state करेंगे. If you want to write it in terms of psi of k or psi psi of k of psi can be written as k of I फॉर डिस्क्रीट स्टेट. अब इसकी टोटल जितना हम निकालते हैं ना, ये एक्सपेंशन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं. ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के है एंड इसका ये जो कंपोनेंट्स, दिस इज फॉर डिस्क्रीट स्टेट्स एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर कंटिन्यूम स्टेट्स. वेयर ये जो है ना के प्राइम डी के, ठीक है, यू कैन से इट्स द वैल्यू ऑफ बिटवीन के प्राइम एंड के प्राइम प्लस. सो जो ऑब्जर्वेबल का वैल्यू जो है ना, बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या निकालते हैं, इट्स द रैंडम मीन ऑफ ऑब्जर्वेबल्स अलोंग लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज. You just see it. So you can, in this sense, you can say the value between k prime and k prime plus इसके दरमियान क्या है इसका डिफरेंट वैल्यू, उसी का फिर मीन और एवरेज वैल्यू निकालते हैं एंड वहां से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ सम इंटरवल, हम कहते हैं डी के इंटरवल. इन सम इंटरवल वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ दैट स्टेट. फिजिक्स Genius. You just sit if you want to sit. Yeah. तो ये है, it's like this. तो अब if you remember last time हमने Schrödinger इक्वेशन को we wrote x and x prime in terms of Hermitian operators, है ना, x at the end how we can write Hermitian of polynomials and Hermitian polynomials का जो generating function है उसको हमने in terms of state psi लिखा, ठीक है.
if we just go back in the solution of Schrodinger equation, exactly, yes, here. Psi of nx we wrote as like this. तो जो वेव फंक्शन है ना, एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन साई फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये x है, ये है इन टर्म्स ऑफ सम हर्मिट पॉलिनोमियल, उसका एक जनरेटिंग फंक्शन होता है स्पेस में। तो अब वी आर गोइंग टू, जो हमने ये एक्सरसाइज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, वी विल राइट टू फॉर कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट स्टेट्स, वी आर गोइंग टू डू द सेम फॉर जो हमारे पास ये था, दैट्स इट। अब ये कह रहा है कि फॉर एन पर्टिकुलर पोजीशन x, यहाँ है ना x, फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन x there is a Hermitian operator x for the observator, है ना, जिसके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जब हम प्लॉट करते हैं, दैट्स इट। सो एंड द वैल्यूज कैन वैरी फ्रॉम -infinity to +infinity, डिपेंड्स। ये क्या है, द थिंग इज दैट, एंड फॉर अ गिवन स्टेट अगर x है, operator it acts on state psi, it should give us this. And if there is a normalized state, तो normalized state में क्या आएगा, ये x prime state है, ये dx है, ये x prime d is going to 1, ये ना बेसिकली ये है ना, ये this x ऐसे and x, so it will be 1. So it's basically cat and bra. इसको आप ऐसे रखोगे तो it will be equivalent to 1. This is the normalized state. And state is that's it. And the components जो इसके हैं constituting the real variable of physics to जो components हैं the components x of prime psi which constitute the complex value function of, by identifying psi of x prime psi. तो ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं दिस psi की। So we can identify psi prime with this x of psi, where this is state, this is cat, this is state, this thing, and psi is some उसका component of that wave function psi. अब हमारे पास ये है कि since we are interested, एक होती है कि position representation, the other is the coordinate representation. Coordinate representation मतलब क्या हो गया, ये कहाँ पर है ना, पार्टिकल कहाँ पर है, अब पार्टिकल x is related to psi, state psi का कहाँ पर correspond करेगा, यहाँ पर in the spectrum of these states, ठीक है। अब हमारे पास how we are going to have a coordinate representation of the inner products of two states psi 1 and psi 2, two states inner product psi 2 psi 1, दूसरा डॉट प्रोडक्ट करते हैं वही हो गया इनर प्रोडक्ट, जैसे a डॉट b है ना, a b, so इसमें ये है these are two states, those two states can be same also, then its psi square is 1, or they may be different. If they are different, उसमें भी केस बनता है, whether they are orthonormal or whether they are orthogonal, ठीक है। If there are two states psi 2 psi 1, उनका inner product in two-dimensional space, इनका find x की representation यहाँ पर in the continuous space.
ठीक है, इन टू डायमेंशन इट कैन बी, तभी तो हम दो इंटीग्रल्स लाते हैं, सो इट बी साई टू एक्स प्राइम डी एक्स एक्स प्राइम एक्स डी एक्स प्राइम, तो यहाँ से थोड़ा सा और आएगा एक्स प्राइम साइन वन। सो एक तो है साई टू ये वाला, ये ठीक है, ये एक्स एक्स साइन वन प्राइम आएगा। सो इट्स साई टू एक्स डबल प्राइम एक्स प्राइम साइन वन प्राइम एक्स टू प्राइम एक्स टू कैट ऑफ दिस स्टेट एक्स प्राइम डी एक्स, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ठीक है। अब जो तो हमने कहा था कि इट्स रिप्रेजेंटेड बाय नॉट बाय कोरोनिकल डेल्टा बट डिराक डेल्टा फंक्शन, तो इफ इट इज लाइक दैट, सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस साई टू एक्स डबल टाइम प्राइम डी एक्स डबल प्राइम ठीक है। तो एक बार अगर वन ऑफ देम विल गेट एब्जॉर्ब्ड फॉर दिस इज इक्वल टू एट सम स्टेज इट इज इक्वल टू वन, मतलब इट विल हैव सम डेफिनिट वैल्यू, तो विल बी अराइव्ड एट psi 2 x prime and psi 1 x prime. तो यहां से आता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल स्टेट्स इज जीरो। तो अगर दो स्टेट्स ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे की फ्रॉम दिस डेफिनेशन, सो देयर वैल्यू इज जीरो, सो व्हिच वेरीफाइज आवर अर्लियर, ये एक्सरसाइज हमने पहले भी की थी, ठीक है। सो वी आर सीइंग फ्रॉम फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, सो इफ वी रिप्रेजेंट टू डिफरेंट स्टेट्स, इनका रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ psi 2 and psi 1 and taking Dirac delta function, we are arriving at this side in terms of psi 2 psi 1, and since they are different they are orthogonal, इनका वैल्यू भी, so it verifies our earlier intuition. And towards the end what we are going to say is that अगर हमारे पास state psi है ना x double dash, it's one of the states, it's operating upon by some, this is state, this is another state, so we can yeah, rather it's this thing x state x of a x prime, so it's an, this is operator, this is state, this is also state, so this state acts on this state, it will become this state, okay. So even a given state, this thing can also be represented like this, such that जो इसकी फंक्शनैलिटी होगी ना, that will depend upon x minus x prime, whether its value after this inner product, for example this function is going to operate on this state psi, ठीक है, उसका फिर inner product इसके साथ, ठीक है, what we will get depends whether x prime is equal to x prime, तो Dirac delta function, ठीक है, or if x is not equal to x prime, for x is equal to x prime it will be 1, for x is equal to not equal to x prime it will be other value 0, ठीक है। So this is the thing, so in the sense, तो ये तो सब कुछ हो गया how we can write this thing, but towards the end what we want to say is that that our coordinate representation है which acts on the wave function, is given by this as point alpha dy, है ना,
ये पता है दिस ऑपरेटर क्वेश्चन ऑपरेटर आप देखते हैं जस्ट अगेन चेक इवन टेबल में हाउ इट रिप्रेजेंट बाय क्वेश्चन ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर फ्रॉम दोज हम वहां से आइगन स्टेट्स पे एक्ट करते हैं दे विल गिव अस द आइगन वैल्यूज ठीक है जब हमारे पास होता है ना शुरू में फोर्स मास एंड है ना वेक्टर तो क्या है वेक्टर तो एक बार इंटीग्रेशन करो तो क्या है mb प्लस दूसरी इंटीग्रेशन करो तो एंगल डिस्प्लेसमेंट हाँ so you can start from displacement velocity and acceleration है ना so in the same way ये है ना एक मैकेनिज्म how to relate force to energy to mass to acceleration है so in the same way उसका जो correspondence है quantum mechanics we have motion operator momentum operator energy operator उनकी eigen values these act on eigen states they will be eigen values अब सिर्फ इसमें और उसमें क्या फर्क है the फर्क ये है कि जो position momentum minus momentum into position to have for any point the two variables classical mechanics it will be always zero but in quantum mechanics अगर आप position and momentum but आप position को कैसे करोगे you are going to see position operator operating on some x इसका momentum so but when you see जो है in quantum mechanics x minus px होगा it's not zero it's every you do it as an exercise ठीक है you do it for any function you cannot come out with zero full stop